तो अभी हम लोग जनरल एक चीज और डिसाइड करना था कि आप लोग ना मुझे ये ना बोलना पड़े बार बार कि आगे चलिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करने से क्या है, सारे बच्चे जिसका लाइव रिव्यू होता है ना उनको ये विश्वास होता है कि हमको इस टाइप से क्वालिटी मिला है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होता है। और सुधांशु सर हम लोग शुरू करेंगे प्लीज। हाँ पूजन सर, वैशाली मैम, विभा मैम, सब शुरू करिए आप लोग। ओके सर, ये मोहित मिश्रा ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? उन्होंने टैग से यूज किया है। ऑप्शन दे रखा मार्कंडेश्वर, ऑप्शन बी कैलाश, ऑप्शन सी मनु देवी, ऑप्शन डी भीमा शंकर। सर स्लाइड डाउन करिए। शिखा जायसवाल का मंदिर किसी की आवाज जा रही है? शिखा जायसवाल का कमेंट है, मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अपने अलौकिक मूर्ति कलाओं के लिए, विशेषतः कामुक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन देश में और भी ऐसे मंदिर समूह हैं जो अप्सरा और देवांगना की प्रतिमाएं एवं बेहतरीन शिल्प कला में खजुराहो को टक्कर देते हैं। ऐसे में ही मंदिर समूह है मार्कंडा मंदिर समूह, जो महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में स्थित है। उपयुक्त में विकल्प ए सही है। इससे अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कमेंट से, और क्वेश्चन भी से अच्छा। अच्छा, मंदिर को विदर्भ के खजुराहो, यानी कि ये जो इस तरह का मंदिर है तो खजुराहो की तरह बराबर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यादवेंद्र सर। आप शिवम सर इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस की है कि कमेंट्स की क्वालिटी के हिसाब से हम पॉइंट्स को वेरी कर सकते हैं। पहले जैसे हमारा था कि सिर्फ क्वालिटी पॉइंट्स दे सकते हैं, अब हम डिसाइड कर सकते हैं 0.2 से लेकर के 1 के बीच में कि कितने पॉइंट दिए जाए। आई थिंक ये कमेंट को 0.4 या 0.6 तक ही रख सकते हैं। 0.4 देते हैं। हाँ, तो ये हमने आज से हमारा नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो इसको हम लोग अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। सुधांशु सर ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 1, 3, 7, 13, 21 और अगली संख्या क्या होगी? सर ने ऑप्शन दे रखा है 27, 29, 31, 33। अंशिका ने कमेंट किया 1 + 2 3, 3 + 4 = 7, 7 + 6 = 13, 13 + 8 एक दूसरे में मतलब ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा कमेंट है। 0.4। हाँ शिवम सर, यादवेंद्र सर, क्या इस पे 0.4 दिया जा सकता है, 0.2 दें? जी सर, इस पे सर 0.2 का क्वालिटी दें कि 0.4 का दें? नहीं सर ठीक है, रीजनिंग में 0.2 ठीक है 0.4 देते हैं सर। जी, ठीक है। एक्चुअली सर इसमें क्या है ना, पहले क्या था, फिक्स होता था कितने दिन, आप हम फिक्स कर सकते हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर, तो हम 0.2 देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चंस को अक्सर सीरीज के क्वेश्चन नॉर्मल आ रहे हैं। अब उसने डिस्क्राइब तो पूरा कर दिया है, तो इसको 0.4 भी में भी दे सकते थे। ऐसा ये भी सही कर रहे हैं सर, थोड़ा क्वेश्चन की डिफिकल्टी के ऊपर दे रहे थे। ओके सर। मोहित मिश्रा ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, चित्र आचार उपेंद्र महारथी की पुस्तक बेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? टैग इन्होंने सही यूज किया है। ऑप्शन दे रखा आभूषण चित्रकारी,
और इसमें अगर इस तरह के टैग होंगे तो आप लोग एग्जाम देते समय सिविल सर्विसेज या वनडे का 2 टैग यूज करते हैं, उसके अलावा आप कोई टैग नहीं यूज करते। अगर उससे जुड़ा टैग नहीं होगा तो ये आप लोगों के टेस्ट में नहीं आएगा फिर। इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिए कि सिविल देना है कि वनडे देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ है, आप सारे स्टूडेंट को ये जो सिविल सर्विसेज टैग यूज करें, सिविल सर्विसेज के लायक ही क्वेश्चन डालें, वनडे के बच्चे वनडे का ही टैग यूज करें, इस यस चीज़ का सर। ध्यान रखिए सर, नहीं तो ये ओके आपके सर। ही टेस्ट में प्रश्नों की कमी होना शुरू हो जाएगी। यस सर। सो ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, आभूषण, चित्रकारी, बांस कला, संगमरमर की नक्काशी। कमेंट देखते हैं सर। हाँ सर। शिखा जायसवाल ने कहा बांस कला से है, उपयुक्त में से विकल्प सी सही है। सर लाइन टू लाइन किया है इन्होंने आंसर। तो आगे चले। हाँ सर। सर मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं सर हम लोग। हाँ तो मैथ के क्वेश्चन कर लेते हैं सर हम लोग के साथ अभी में। जो लेटेस्ट मैथ के क्वेश्चन पढ़े हैं वही हम खोल दे रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन पे क्वालिटी भी आप लोग बोल के जाइएगा सर। यादवंत सर आप भी मैथ के क्वेश्चन है। यादवेंद्र सर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ABCD 5 क्रमागत विषम संख्या है तो इनका औसत तो कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी? हाँ सर। सर जैसे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कर रहा था मुझसे नहीं हो पा रहा था। देखो ये क्रमागत संख्या जब भी सीरीज में होती है ना, तो इनका जो एवरेज होता है वो मिड टर्म होता है। यस यस सर। तो इसका जो एवरेज होगा वो सी होगा, मिड टर्म होता है हमेशा। यस यस सर। ठीक है, अगर वो यस सर। सीक्वेंस में तो यस सर सी हो रहा था, बट जैसे मैं मतलब नंबर से लिख के सर कर रहा था तो जैसे नहीं नंबर वगैरह मत लीजिए, आप बस ये याद रखिएगा कि अगर कोई नंबर सीक्वेंस में है तो उसका जो एवरेज होता है वो मिड टर्म होता है। हाँ सर ओके, इसमें सर क्वालिटी दे सकते हैं नंबर प्रश्नों लिख पे। के सर सेटिस्फाई कर रहा था तो वहाँ पे कुछ नहीं चीजें नहीं नंबर हो रही लिखने की थी। जरूरत नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, आप उसी को याद रखिए। ओके ओके सर। बाकी वो मैंने हम सोचे नंबर लिख के मैं कर रहा था तो हो नहीं पा रहा, तो हमने सोचा कि हो सकता है मिड टर्म वाला कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हो। इस पे क्वालिटी दिया जा सकता है सर। यादवेंद्र सर दे दीजिए सर, पॉइंट टू क्वेश्चन ठीक है। नहीं सर नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे मत दीजिए। दे दिया, मैंने लगा कि आप बोल रहे हैं सर की आवाज किसी और से थी। हाँ इसको देखते हैं सर। इस पे कमेंट आई थिंक तो कमेंट भी है, पढ़िए सर। बिल्कुल शिवम सर। ये शिवपूजन सर। ओके ओके। अंशिका पांडे ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा स्थान ए से स्थान बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? इसमें सो टैक्सी उसके ऑप्शन दे रखा है 62, इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं मतलब जिसमें दूरियां फिक्स होती है और जाता किसी डिफरेंट चाल से है और आता किसी डिफरेंट चाल से है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो होता है फार्मूला, जो एवरेज स्पीड होती है वो सर 2 गुणे मतलब जो 2 डिफरेंट डिफरेंट चाल दी रहती है उनका गुणनफल बटे दोनों चालों का योग। तो जैसे अजय ने यहाँ पे कमेंट्स किया और किलोमीटर प्रति घंटा, सर सही है इनका आ जाएगा। सिंपल है, आप 2ab वही 2ab a प्लस b लगा दो। बिल्कुल सर, अगर दूरी सर निश्चित रहती है तो 2ab बटे a प्लस b। हाँ बिल्कुल सही है। और ये निकिता ने भी सर सेम वैसे ही कमेंट्स किया, इन्होंने XY करके दिया है।
कमेंट्स पे सर क्वालिटी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए सर, आप लोग ना ये डिसाइड कर दिया करिए प्रश्न पे कितना क्वालिटी देना, कमेंट पे तो मैं उस तरीके से दे दूंगा, ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा। ओके दे दे सर। यस सर, यस सर। सर 0.4 और 0.22 दे दीजिए कमेंट्स पे 0.22। रवि सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये नया तरीका है क्या, रवि सर कमेंट गुड पर भी स्कोर दिया जाएगा? जी सर, एक्चुअली इसमें पहले क्या फिक्स था सर रवि सर, जैसे हाँ, कि हाँ। पोस्ट पे एक पॉइंट फिक्स था, कमेंट पे 0.2 फिक्स था और रिप्लाई पे हाँ। 0.5 फिक्स था। अभी हाँ। हमने उसको वेरिएबल कर दिया, किसी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया तो हम उसे कमेंट पे भी 1 पॉइंट तक दे सकते हैं, 0.2 से लेकर के 1 पॉइंट तक। ठीक और है। अगर क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी है तो उसको भी 0.2 से लेकर के 1 के बीच में डिसाइड कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन जैसे उसकी क्वालिटी है, जैसे उसका एक्सप्लेनेशन है, उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। आगे बढ़िए शिबूजा सर। उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, आप इसे x मान के कर दे सकते हैं, इजी होगा। यस सर। और सर तरीके जो है मतलब थोड़ा टाइम उसमें लगेगा। हाँ हाँ, ये x से इजीली हो जाएगा। कभी कभी x क्या होता है, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, यस यस सर। क्योंकि उसमें सोचना होगा, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ओके सर। सर आगे बढ़ते हैं। सर क्वालिटी दे सकते हैं ना? हाँ जी 0.2 देते हैं। जी सर। क्वेश्चन पे 0.5 क्वालिटी दीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है सर। एक क्वेश्चन पे दे चुका है सर पहले अच्छा, ही। इस पे मैंने दिया ऑलरेडी। इन्होंने अजय यादव ने क्वेश्चन पोस्ट किया है 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 SSC भी डाल दीजिए इसके प्लस 2 की घात 74 किसके विभाजित है? आई थिंक यहाँ पे किससे विभाजित होना चाहिए। बाकी सर शिवशेखर ने कमेंट अच्छा किया था। इन्होंने और 2 प्लस 2 की पावर 3 बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद में सर आएगा 2 की पावर 71 इंटू आ जाएगा यहाँ पे शायद 15 आएगा, ऐसे 15 आएगा। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे 2 की पावर 70 करके और 2 को 15 से गुणा किया, 30 आ जाएगा। और 30 ऑलरेडी सर 10 से विभाजित है। तो अच्छा कमेंट किया सर। यादवेंद्र सर और कोई लॉजिक होता नहीं है? नहीं, बेस्ट है, यही लॉजिक लगाता मैं भी। 2 की पावर 71 कॉमन लेके फिर अंदर जो बचता है उससे डिविजिबल हो जाता है। मीटर की ऊंचाई से नीचे तक की जाए, आई थिंक नीचे फेंकी जाए तो वह अपने पिछले बाउंस का 4/5 उछलती है। जब तक गेंद रुकेगी तब तक गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। सुधांशु सर, इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में एसएससी टैग ऐड कर दीजिए। सुपूजा सर, आप ना टैग नहीं पढ़ा कहीं, जिससे सर लोगों को लगे हाँ इस एग्जाम का भी टैग हो सकता है, तो मैं ऐड कर दिया करूंगा। ओके सर। मैंने कहा था सर। शिवपूजन जी, ये टैग एडिटिंग आपके पास एक्सेस है ना? हाँ सर, मैं करता हूँ मैक्सिमम चीजें लेकिन जो इसमें मतलब क्वालिटी बोनस दिया जा चुका है, टैग एडिट नहीं किया गया। ऐसे नहीं कीजिए, जब आप रिव्यू कर रहे हैं क्वालिटी बोनस भी उस क्वेश्चन पे दिया जा चुका है, तो टैग भी आपको साथ ही साथ उसको करेक्ट करना है। तो मैक्सिमम टाइम मैं मतलब जब क्वालिटी देता हूँ तो वहाँ पे कर देता हूँ। कुछ में क्या होता है सर, हो नहीं मिसिंग पाता था, है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान ओके दीजिए। ओके सर। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने सर 4500 मीटर, 4400। सुपूजा सर, आपकी आवाज बीच में कट जाती है। कुछ नेटवर्क इशूज हो रहा होगा। अब सर जा रही क्लियर? हाँ क्लियर आ रही। ओके सर। सर ऑप्शन रीड कर चुके, कमेंट देखते हैं। यादवेंद्र सर चेक कीजिए आप। हाँ सही है, इसमें जीपी लगाया है इन्होंने, जीपी ही लगेगा इन्फिनिटी तक, E/1 - R। सर और कोई भी लॉजिक होता है इस नहीं तरह नहीं साल? नहीं, आप जीपी लगाओगे क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, पता नहीं कितनी बार जंप करेगा, तो इन्फिनिटी सीरीज लगाओगे जीपी में, क्योंकि एक
सीक्वेंस नंबर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो आप जीपी लगाओगे वहां पे। यस यस सर। होता है सैलरी क्वालिटी 0.5 क्वालिटी दीजिए। सर इसमें 3 क्वालिटी है, 0.2, 0.4, 0.6 कर दीजिए, 0.6 कर दीजिए 0.1। सर। 2 का 0.2 का इसमें स्टेप्स है सर। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। माने 5 तरह की पॉइंट है सर, 2 के मल्टीपल में। सर एक क्वेश्चन और था जी सर। टाइप का था, कोई बात नहीं सर। सीमू शुक्ला ने क्वेश्चन पोस्ट किया है, खन्ना ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर 10,000 रुपए का ऋण 3% वर्ष की दर से लिया। कुल राशि जो वह 2 साल में ब्याज के रूप में चुकाएगा वह उसके मासिक वेतन का 3% है। उसका मासिक वेतन कितना है? सर उन्होंने टैग यूज किया है मीडियम हिंदी वनडे एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पीसीएस। सर ये यूपी ट्रिपल एससी में भी ये जो है सिंपल इंटरेस्ट आता है सर। हाँ हाँ हाँ। यूपी पीसीएस नहीं आता सर। सिंपल कंपाउंड दोनों आता है यूपी में। यूपी मैथ, यूपीएसआई, यूपी पीसीएस में नहीं आता सर, इसलिए हटा दिया। इसको मोहित ने सॉल्व किया है सर। इसे इसको मोहित ने सॉल्व किया एक्स मान के। इन्होंने वेतन को एक्स माना है, 3% का जो इन्होंने 10,000 गुणे 3 इंटू 2/100, यहाँ पे से 20,000 रुपये आ रहा है उसका मासिक वेतन। सही है उत्तर। हाँ सिंपल है, इजी है, सही तरीके से किया बच्चे ने। क्वालिटी किया जाए 0.6 13 सर। ओके ओके सर। ये क्वेश्चन सीमू शुक्ला ने पोस्ट किया है, एक लंबी दूरी की धावक 400 मीटर के ट्रैक के 9 लैप्स रोज चलती है। लगातार 4 दिनों तक उसकी समय मिनट में क्रमशः 88, 96, 89 और 80 मीटर प्रति मिनट में तय करता है। उन्होंने टैग यूज किया मीडियम हिंदी वनडे एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपीपी मैथ्स। ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 40, 90, 19, 40, 90, 53, 19। सर सही एक्सप्लेनेशन है, याद भी है सर? हाँ सर बोलिए। सर हाँ वही है, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड जो हमने लास्ट किया था उसी तरीके से किया बच्चे ने। हेलो। यस सर, यस सर। वही है, वही जो फॉर्मूला था लास्ट में वही लगाया है बच्चे ने। ओके सर। दो सर ये सवाल और क्वेश्चन मैथ के। आसिफ रजा ने सर ये क्वेश्चन पोस्ट किया है, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे। ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, 0 आएगा इसका आंसर, क्या क्योंकि ऑप्शन मैंने उन्होंने बताया दिया था। है? हाँ क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आपको 0 चाहिए तो 0 के लिए इवन और 2 और 5 चाहिए होता है, इसमें सारे ऑड नंबर हैं तो 2 आएगा ही नहीं कहीं। यस यस सर। कमेंट देख लेते हैं। शिपूजन जी, वैशाली मैडम, टैक्स पे ध्यान दीजिए। आप जब रिव्यू कर रहे हैं तो उसी समय कोशिश कीजिए उनको कवर कीजिए।
ठीक है सर, दे तू जैसे सर ये क्वेश्चन जो है, एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया, बच्चों को काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को काम से हटा दिया और 50 बच्चों को भी काम से हटा दिया और उनकी जगह अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो। या 3 आदमी 5 औरतों के बराबर और 2 औरतें 3 बच्चों के बराबर हो। ऑप्शन दे रखा सर 140, 114, 150, 110। टैक्स यूज हुआ। सर आपका ही प्रश्न है ना? हाँ सर। सर देखिए कमेंट्स किया किसी ने, नहीं तो फिर कमेंट नहीं है सर, कमेंट 0 है सर। ओके सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पा रहा था तो हमने कहा यहाँ पे डाल देते हैं, आपसे सर हो जाएगा। वही है, इसमें सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे। थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। ओके थोड़े से रीजनिंग के ले सकते हैं सुधांशु सर हम? हाँ, मैथ के कल के डेट के जितने हैं लगभग पूरे हो चुके हैं, बाकी सब रिव्यू में आ चुके हैं। शायद ये सब रिव्यू के क्वेश्चन है, यही एक रिव्यू का नहीं था। बाकी आई थिंक ये सब रिव्यू, यही एक क्वेश्चन और बचा है, तो कल रिव्यू में नहीं था। सर क्वेश्चन में दे रखा सर a² + b² + c² = 2। तो a + b + c की वैल्यू पूछी गई इसमें। ऑप्शन सर -1, -2, 1, 2। सर टैक्स यूज हुआ। ये सराजा ने सही सॉल्व इसमें क्या किया। वैल्यू गैस करके हम कर सकते हैं, LHS RHS करके इक्वल। यस यस सर। राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड। इनको क्वालिटी वगैरह दी जा सकती है, दी हुई है। अब मैं थोड़ा रीजनिंग खोलूं। हाँ यस यस सर, रीजनिंग ओपन कीजिए। हाँ सर। यस सर, ये क्वेश्चन राहुल यादव ने पोस्ट किया है। कथन दिया है इन्होंने, सिटी वाई में कई लोग कोरोना से पीड़ित हैं। प्रतिक्रिया में इन्होंने पहली प्रतिक्रिया दे रखी है, उठाने चाहिए। और दूसरी प्रतिक्रिया इन्होंने दे रखा है, शहर के लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि वह बीमारी को रोकने के लिए स्वयं से कुछ उपाय करें। तो इन्होंने टैग यूज किया मीडियम हिंदी, SSC CGL वनडे एग्जाम रीजनिंग, रेलवे एग्जाम, लॉजिकल रीजनिंग से टैग से यूज हुआ। SSC 10+2 भी यूज कर सकते हैं सर। हेलो सर। हाँ, PCS प्री, RO, ARO, लोअर PCS, वीडियो, लेखपाल, ये सारे टैग यूज कर सकते हैं। यस यस। और सर क्या? हाँ कर इतना सही है सर। यस यस।
सर ने इतना ही बोला था। मैं यहीं से निकल जाऊंगा। ठीक, ये है इसका विकल्प। कल हम अपनी क्लास नहीं रखते हैं ना, हमारी क्लास शनिवार को हो जाएगी। शनिवार को 1 घंटे रहेगी। ओके सर। सो ऑप्शन दे रखा है, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए पहले प्रतिक्रिया समझ लीजिए कि प्रतिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए इसे कार्यवाही भी कहते हैं, एक और शब्द है इसका, पेन, कार्यवाही आता है, कथन तथा कार्यवाही। कार्यवाही और प्रक्रिया लगभग सेम चीजें होती हैं। इसमें सामान्य जीवन की चीजें होती हैं, जो आपके सामान्य जीवन में घटित होती घटना, जैसे कि आप सड़क से जा रहे हैं और आपको एक दुर्घटना घटित व्यक्ति दिखता है तो आप क्या करेंगे, या आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई आपको चोटिल दिखता है तो आप क्या करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हो गए। ऐसे आप घर में बैठे हैं, बाहर बंदूक, ये पुलिस में आया क्वेश्चन है जो बोल रहा हूँ अभी। आप घर में बैठे हैं और घर के बाहर बंदूक चलने की आवाज आती है, आप क्या करेंगे, है ना। तो इसमें एक घटना दी रहती है, उसके हिसाब से आपको स्वयं विवेक से चीजों को समझना पड़ता है, सामान्य जानकारी के आधार पर। जैसे इसमें लिखा है सिटी वाई में कई लोग कोरोना से पीड़ित हैं। देखिए कोरोना जो एक बीमारी है, उसे विज्ञान की भाषा में छुआछूत या संक्रामक बीमारी है, जो कि संक्रामक रूप से फैल रहा है। तो इसके लिए नगर निगम को इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो नगर निगम ही अपितु नहीं, सरकार की सारी संस्थाएं जो भी हैं, उसको इस बीमारी को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये एकदम सही प्रतिक्रिया है। दूसरा है, शहर के लोगों को सलाह दी जानी चाहिए कि बीमारी को रोकने के लिए स्वयं से वे कुछ उपाय करें। ये भी एकदम सही प्रतिक्रिया है, क्योंकि ऐसा सलाह दिया भी जा रहा है। आप अभी हाल के करंट में देखिए तो कोरोना से पीड़ित होने के लिए पहले तो सरकार भी कदम उठा रही है, और दूसरा चीज है कि बीमारी को रोकने के लिए हम लोगों को भी चीजों को बताया जा रहा है कि मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, ये सब चीजें बताया जा रहा है। तो ये एक भी और दो भी, दोनों प्रतिक्रियाएं लागू होती हैं इस पर। चलिए शिवपूजन जी। हाँ ये सर। हाँ समझ में आया चीजें? इसमें दोनों इनका सर हाँ कथन सर, हाँ सर समझ में आया। इसको विकल्प देखिए, कमेंट सुन देखिए। दे हाँ सर, इन्होंने लिखा है विकल्प 4 सही है, कथन एक आवाज नहीं आ रही शिवपूजन सर। और दो दोनों का पालन करेगा, और दो दोनों पालन और करेगा, नागरिकों को भी नगर निगम की जानकारी में महामारी है तो उसका रोकथाम करना है, और नागरिकों को भी जागरूक होकर महामारी से निपटना जरूरी है। तो सर कमेंट इनका सही है, क्वालिटी दे सकते हैं। वही जो आपने बताया वैसे लगभग है, क्वालिटी से बिल्कुल सर। सर आगे ये कारवा में अगला क्वेश्चन ओपन कीजिए। मैं ही पढ़ूं क्या सर? यही क्वेश्चन को ओपन किया हूँ मैं। हाँ, पढ़ रहा हूँ। एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊंट हैं, और कुछ उनके रखवाले हैं। यदि कारवा में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हो, तो बताओ कि रखवालों की संख्या कितनी है। वनडे एग्जाम, मीडियम हिंदी, रीजनिंग, 10+2 एसएससी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, एसएससी जेई, यूपीएसआई, रेलवे ग्रुप बी, आरआरबी, एनटीपीसी। इनका है 16, 15, 18, 19, 15 सही है। और निधि शुक्ला ने इस पे कमेंट किया हुआ है 28 तारीख को। एक्चुअली लोग फार्मूला लिखते नहीं, सीधा वैल्यू रख देते हैं। नहीं सर, ये वैल्यू वाला क्वेश्चन ही है, क्योंकि इसमें 4 तरह के जीव है ना। सही है, एकदम सही है। क्वेश्चन बनाकर ही इसको सॉल्व करना है। एक तरह का क्वेश्चन एसएससी में पूछा भी जा चुका है, एकदम सही है। आज हमारे ख्याल से ना एसएससी में नहीं, ये लेखपाल में पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन लेखपाल में आया है। सर ऐसे क्वेश्चन सर लगभग आ जाते हैं। हाँ, तो ऐसे रीजनिंग के आपके क्वेश्चन बहुत कम है शिवपूजन सर आप लोगों के। हाँ सर जैसे इन्होंने दे रखा है, ये 24 प्लस आपकी आवाज कट रही, मैं पढ़ देता हूँ। ये 24 प्लस 15 प्लस 93 एवं क्या होगा। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी। सर आवाज नहीं जा रही थी क्या?
नहीं, आवाज नहीं आ रही थी, समझा देते हैं इसको। क्या हुआ है, दोनों नंबर्स को जोड़कर डिजिट को ट्रांसफर कर दिया गया है। यस सर, रिवर्स कर दिया गया है सर, जोड़ के दोनों रिवर्स को, कर दिया फिर इकाई का अंक दहाई, दहाई का अंक इकाई। सहायकांक इकाई, वेरी गुड। 24 15 जोड़े तो होता है 39। 24 और 15 का जो जोड़ होगा मित्रों, देखिए ध्यान समझ लीजिए, 24 प्लस 15 अगर हम जोड़ें तो टोटल हो जाता है 39, और इसको रिवर्स करके लिख दिया गया है, मतलब 93। यही तरीका लगाया गया। 17 और 32 जोड़ेंगे तो 49 होता है, और रिवर्स करेंगे 94। अब इस तरह से 41 और 34 को जोड़ देना है, और उसके बाद जोड़ने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, और यहाँ पे बन जाएगा 7, और इसको बदल देंगे तो 57 आंसर आ जाएगा, जो कि विकल्प ए है। हाँ, कंटिन्यू करिए, कमेंट पढ़िएगा। ये सर नई जुड़ी है, निकिता सिंह मैम है, ये हाँ। इनका अच्छा कमेंट आजकल बढ़िया आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर अंशिका ने भी, हाँ सर, हाँ सर, निकिता जी को आप 0.6 दीजिए, 0.6 वैल्यू। सर ये लोग कल के रिव्यू में इन लोगों को मिल चुका है 27 तारीख अच्छा, ठीक ठीक। कल तो संडे था सर, 27 तारीख कल ठीक ठीक रिव्यू हो। अभी यही आखिरी क्वेश्चन था सर, ये इनका मैम ने भी लिखा हुआ हो चुका था, तो कल तक सर ये चीजें पॉइंट हुई थी। अब कल कुछ क्या है, 24 + 15 = 9 और +5 = 9। ये सर वो चीजें सर ज्यादा मतलब सही है कि दोनों को जोड़ के रिवर्स कर देना। हाँ, ये सही है। जैसे अभी 5 4 9 9 इधर लिख गया, 2 1 3, ये भी ऐसे नॉर्मल जो सर ने बताया। सर अब अगर अभी मतलब जनरल करते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट अब ज्यादा सिलेबस है। सुपूजन जी की आवाज बढ़िया नहीं आ रही। अंशिका ने लॉजिक यूज किया, अगर यहाँ पे सर मतलब होता और चौथ पे प्रॉब्लम हो जाती। हाँ, बड़े संख्या आती तो दिक्कत हो जाती, जिसमें हासिल लगता वो दिक्कत कर देता। वैशाली मैम, सुपूजन सर, आप लोग आगे बढ़िए। ये सर ये सीमू शुक्ला ने क्वेश्चन पोस्ट किया है। गिर केसर जिसे भौगोलिक संकेत जीआई गिर टैग केसर दिया जिसे गया, भौगोलिक संकेत जीआई टैग, और सकता है कि इन्होंने सही डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इन्होंने अंगूर, केसर, आम, सेब, इससे यानी गिर केसर जिसे भौगोलिक संकेत दिया गया। तो केसर, रवि यादव ने इसका कमेंट किया है, गिर केसर भारत में के गिर स्थान है, ऐसे गिर स्थान है ना, गुजरात में से वो सब शेरों के लिए फेमस है। शेरों के लिए फेमस है, उसी जगह का नाम। मोहित, वैशाली मैम, आप लोग कोई इसे रवि यादव ने कमेंट किया है। सुधांशु सर आप ही पढ़ दीजिए, क्योंकि सुपूजन के साथ नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर अभी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, हाँ आवाज आ रही है। ओके सर, रवि यादव ने कमेंट किया है, गिर केसर सुपूजन सर मैं ही पढ़ता हूँ। गुजरात के गिरनार में उगाया जाने वाला आम है या, और इसे 2011 में भौगोलिक संकेत विकल्प आम है। ये गिरनार, गिर केसर यानी गिर केसर सर एक आम है जो भारत के मतलब राज्य गुजरात की गिरनार में उगाया जाता है, और 2011 में इसे भौगोलिक संकेत दिया गया। मोहित मिश्रा ने सर कमेंट किया है, गिर केसर जीआई टैग मिला, आम की एक प्रसिद्ध किस्म है। तलहटी में गिर केसर आम भी उत्पाद के लिए एक चिन्ह होता है, जो कुछ विशिष्ट उत्पाद कृषि, प्राकृतिक, हस्तशिल्प और औद्योगिक सामान को दिया जाता है, जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से उत्पन्न या निर्मित हो रहा है, और कोई और नहीं है क्या? वैशाली मैम नहीं है? पर होता है 10 साल से जो चीजें हो रही हो, फिर वो बेस्ट कर रही हो। वैशाली मैम, विवाह या अंशिका कोई नहीं है?
उनसे बोलो पढ़ने के लिए, आवाज इतनी खिचखिचा रही, समझ में नहीं आ रहा कुछ। हेलो, हाँ सर। इसमें क्वालिटी दिया जा सकता है? हाँ सर, दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? हाँ 0.4 ठीक है। ठीक सर। 0.4 तक दे एक दिया चीज जाता है, मतलब अगर में 10 वर्ष या उससे अधिक समय के उत्पन्न हो या निर्मित हो रहा हो। है। 0.2 मिलता था, इसके पीछे 0.4 मिल रहा है, तो क्वालिटी ठीक ही मिल रही। हाँ जी सर, ये तो है। सर ये क्वेश्चन हो चुका है। ये हो चुका, मैथ हो चुका। ये भी सारे हो चुके हैं सर। इस पे क्वालिटी दे सकते हैं, क्वेश्चन पे भी। सर क्वालिटी है इसकी पहले से। अच्छा है। सर 1 घंटे 2 घंटे में ऑलरेडी मेंटर इसको रिव्यू करते रहते हैं, कॉपी पेस्ट अच्छा। चेक करते रहते हैं, तो इसलिए उस पर दे देते हैं क्वालिटी। बाकी जो बचता है कमेंट होता है, उस पर हम लोग देते रहते हैं, मतलब हाँ नहीं, सही भी है, जो देने लायक है क्वालिटी उस पे देना भी चाहिए। सुधांशु सर। हाँ जी सर। हाँ, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा हमें लाइव में जाना है। हाँ जी सर, कोई नहीं। तो अगर रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते तो उस पर डिस्कस कर लेते, नहीं हम जाए थोड़ा लाइव में नहीं जाना। अभी तो है नहीं सर, कुछ बच्चे अब डालना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा ठीक सर, तो हम आप जीएस के हैं तो आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा। हाँ हाँ ओके ओके सर, ओके सर। आपके रीजनिंग के सर हो भी गए हैं वैसे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सुपूजन सर आप बोलिए। शिवपूजन सर के अलावा भी ऑलरेडी 2 मेंटर हैं, वैशाली मैम और विभा मैम, वो लोग कहाँ हैं? सर अभी लोग तो है नहीं, मैं इसको बोलता हूँ। निधि आवाज जा रही है आपको? ज्यादा हो रही है, मैं बोलता तो सही नहीं जाती। सर रुकिए, मैं आपको दूसरा लोग को पढ़ने के लिए नए लोगों को मौका देता हूँ। निधि आवाज जा रही है आपको? रवि सर आपको आवाज जा रही है? हाँ मामा। आप पढ़िए इसको, प्रश्न को। कंचनजंगा जैव मंडल संरक्षण के अंदर में आप चलिए 1 मिनट रुकिए। प्रियंका या निकिता में कोई है? यस सर। पढ़ सकती हो? जी पढ़िए। कंचनजंगा जैव मंडल क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, यह प्रथम भारतीय स्थल है जिसे यूनेस्को ने मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम में शामिल किया। सेकेंड, यह यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। थर्ड, यह भारत का प्रथम मिश्रित धरोहर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? टैग नहीं लिखा क्या? सॉरी, लिखा है सर, टैग है मीडियम हिंदी, वन डे हिंदी, एग्जाम। हाँ। एसएससी सीजीएल, जनरल स्टडी, जीएस, जियोग्राफी। ओके। वैसे एसएससी सीजीएल में इतने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आते सर, मैं इसमें सिविल भी लगा देता हूँ। हाँ सिविल भी डाल सकते हैं इससे। आपने विकल्प पढ़िए ना? हाँ, कमेंट किया है मोहित मिश्रा जी ने। मानव और जैव मंडल कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय समन्वय परिषद की 30वें सत्र का आयोजन पालेमबांग, इंडोनेशिया में किया गया। इस सत्र में भारत के सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यह यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। कंचनजंगा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2000 में हुई थी। कंचनजंगा नेशनल पार्क को वर्ष 2016 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मिश्रित श्रेणी में शामिल किया गया, अतः विकल्प बी सही है। हाँ सर, बढ़िया कमेंट है इनको 0.6। हाँ सर, ये तो है 0.2 से लोग 0.6 डायरेक्ट हो गए, 0.6 तक बनता है। अब 0.8 और 1 का मतलब है जब बहुत ही अच्छा कमेंट हो तब।
तो सारी चीजें क्लियर हो और कुछ अलग इंफॉर्मेशन भी हो। यस यस। हम लोग कहाँ तक थे यहाँ पे, वो क्या है? पढ़िए। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? टैग है वनडे एग्जाम, मीडियम, हिंदी, जनरल स्टडी, जियोग्राफी। एंड ऑप्शन, जैसे इसमें ऊपर नाम लिखा था कि उनका क्वेश्चन है, ये भी जी पढ़ना जी है। जी जी सॉरी, हाँ। क्वेश्चन है रंजीत सिंह का। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी मानसून, बी दक्षिण पश्चिम मानसून, सी उत्तर पूर्वी मानसून, डी उत्तर पश्चिम मानसून। और इस पे कमेंट किया है अजय यादव ने, उपर्युक्त में विकल्प बी सही है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा भारत में जुलाई अगस्त सितंबर में काफी वर्षा होती है। इस दौरान स्थल पर तापमान अधिक होने के कारण दाब कम होता है और हवाएं जल से थल की ओर चलती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम मेघालय है। एंड सेकंड कमेंट है मोहित मिश्रा, दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जो कि देश की वार्षिक वर्षा का 70% तक वर्षा करता है, आधिकारिक तौर पर 1 जून से केरल में मानसून की शुरुआत के साथ शुरू होता है और 30 सितंबर को समाप्त होता है। केरल के तट पर टकराने के पश्चात पूरे देश में मानसून के फैलने में लगभग 1.5 महीने लगते हैं और देश में मानसून के लौटने की शुरुआत भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में 1 सितंबर से होती है तथा मानसून के पूरे देश से वापस लौटने में भी लगभग 1 महीने का समय लगता है, अतः विकल्प 2 सही है। विकल्प दिखाइए जरा एक बार। पहले चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, फिर उसके बाद जो है अब जैसे सर इसमें सर दिया गया है, जैसे अब ये इन्होंने वर्षा के बारे में बता दिया कि इतना टाइम आता है, इतना टाइम वापस जाने में लगता है। इससे अच्छा इसमें और चीजें ये लिख सकते थे कि जब वर्षा होती है तो मानसून में पहली वर्षा कहाँ पे होती है, अंतिम वर्षा मानसून लौटते समय कहाँ पे होती है। ये 2 एडिशनल जानकारी दे सकते थे, तो मतलब और भी क्वालिटी नहीं मिल सकती। यस सर, एग्जाम ओरिएंटेड नॉलेज जो हाँ, चीजें वो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में जब मानसून आता है तो पहली वर्षा कहाँ पे होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जाते समय आखिरी वर्षा कहाँ पे कराता है, तो ये सब पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो और अच्छा लगता है। ये सही, मासिन राम मेघालय का जिक्र किया था, तो वहाँ पे मतलब वो सबसे तो ज्यादा ठीक है। क्यों होती है, सबसे ज्यादा क्यों होती, कारण दे सकते थे। हाँ, वही कारण भी दे सकते थे। तो मतलब ये है कि 0.8 और 1 वाला जो खेल है वहां तक पहुंचा जा सकता था जब ब्रीफ जानकारी कम शब्दों में दी जाए। ओके और ये भी मतलब नहीं कि पूरी आप पूरा पेज लिख दीजिए, कॉपी कर दो, ऐसा भी नहीं। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। जैसे मोहित मिश्रा ने कमेंट लंबा किया, लेकिन चीजें कुछ हैं जो मतलब ही नहीं है उनका, कि समय का मैक्सिमम पूछा ही नहीं जाता है और ये डेट भी 1 सितंबर भी फिक्स नहीं होती है। चलिए खैर दे सकते हैं इनको। हाँ आगे बढ़िए। पॉइंट टू सर। हाँ पॉइंट टू मिनिमम जो है सर वो दे सकते हैं हम। आगे खोलते हैं। आशु पूछो सर। इस निकता कंटिन्यू करें ना सर। आवाज तो सही, ठीक है शुरू करिए, कोई नहीं। निकता कंटिन्यू कीजिए। जी जी। चंद्रगुप्त के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं? फर्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य शासन सत्ता को अपने पिता से प्राप्त किया था। नंबर सेकंड, मेगास्थनीज ने 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी। नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिमी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, जिससे भारत, ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। नंबर फोर्थ, मैसूर ने उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिलता है। एक चीज जो सबसे खास बात है, चंद्रगुप्त को शासन सत्ता पिता से नहीं प्राप्त हुई थी। वो जो है नंद वंश के जो है राजाओं से लड़के जो है, राजा से लड़के जो है
प्राप्त किया था, उसकी सहायता जो है उन्होंने उनके गुरु ने की थी। तो जिसे बोलते हैं चाणक्य। तो उनका मतलब तो ये इसका टारगेट यही पहला था ना कि सेंटेंस नंदवंश को उखाड़ फेंकना। हाँ, पूरा ही सेंटेंस इसका जो है पहला जो सेंटेंस है पूरी तरह गलत है। बाकी मेगास्थनीज जो है हकीकत है। क्वेश्चन भी सर, क्वेश्चन भी अच्छा है, इस क्वेश्चन पे भी हम पॉइंट दे सकते हैं। वो दिया जा चुका है सर, कल का क्वेश्चन है इसके। अच्छा निधि जी सर, ये ऐसे एग्जाम में वनडे में तो सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते निधि ने पोस्ट सिविल किया है। सिविल 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 इन्होंने सिविल नहीं डाला है। निधि जी आप सिविल इसमें डालिए। कोई नहीं, तो वनडे हटा दीजिए और सिविल ऐड कर दीजिए यहाँ पे। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी। हाँ ओके सर, जनरल अवेयरनेस चलेगा सर। इंडियन हिस्ट्री का टैग नहीं, एशियन वगैरह का, ठीक है, इतना काफी है। हाँ, चंद्रगुप्त में बाकी सब इनके सब सही है जहां तक मेरी जानकारी है। ओके ओके सर, पढ़िए। चलिए निकिता जी, आपका कमेंट है, आप बताइए। जी, उपर्युक्त विकल्प सी सही है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इनका जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकट्स और एंड्रोकॉट्स के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का भी विस्तार किया। चंद्रगुप्त का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति ग्रीक सम्राट सेल्यूकस के साथ हुआ था। इनका निधन 297 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुआ। बढ़िया। अब देखिए, अब हाँ कमेंट अच्छा है। जैसे अब यहाँ पे जो आपने ये लाइन एक लिखी है, कमेंट सर दिखाइए एक बार। जैसे आपने यहाँ पे एक लाइन ये लिखी है कि एक नया राज्य बनाया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब नहीं रखता इस लाइन का कि एक बड़ी सेना का निर्माण से लेके विस्तार करने की। यहाँ पे अगर आप लिख सकती थी तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, ये भी ठीक है। किससे लड़ के साम्राज्य में बना, मतलब किनको हरा के साम्राज्य बनाया। सर इसमें एक चीज और है, इसमें लास्ट का जो है मैसूर से उपलब्ध कुछ अभिलेखों से चंद्रगुप्त द्वारा शिकारपुर तालुक में के अंतर्गत नागरखंड की रक्षा करने का उल्लेख मिला है। ये कहता क्षेत्रों व्यास सीधे तो चंद्रगुप्त ने समाई थी सिकंदर के बाद, ये तो सही है, इन्होंने लिखा है। मेगास्थनीज के बारे में और चौथा जो ऑप्शन है मैसूर के बारे में इन्होंने इसका वर्णन नहीं किया है। और निकिता मैं ये बोलूंगा ना, जैसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप कोशिश बढ़िया है, लेकिन आपको ये समझाया जा रहा है कि आप और चीजों को बेहतर करें। ये सर अच्छा किया सर, नो डाउट इन्होंने अच्छा कमेंट किया। मैं बता रहा हूँ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं तो जैसे यहाँ पे सर 4 कथन दिए हुए हैं, तो पहला कथन डाल के जो दिया हुआ है उसको डिस्क्राइब कीजिए, फिर लिख दीजिए ये कथन सत्य है या असत्य। फिर दूसरा नंबर 2 डाल के उसके बारे में डिस्क्राइब करके सत्य है या असत्य, तीसरा चौथा ऐसे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जो चीजें सही है उसको रहने दीजिए और जो वाला कथन सर असत्य है वो नंबर डाल के लिख दीजिए ये चीजें ऐसी नहीं ऐसी हैं। उसके बारे में लिख दीजिए, आंसर कर सकते हैं सर अगर शार्ट में देना है तो। शिखा जायसवाल का भी पढ़ लीजिए। कंटिन्यू। जायसवाल का कमेंट है, सम्राट चंद्रगुप्त महान थे। उन्हें चंद्रगुप्त महान कहा जाता है। सिकंदर के काल में हुए चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को 2 बार बंधक बनाकर छोड़ दिया था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को गद्दी सौंप दी थी। बिंदुसार के समय में चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। इतिहास में बिंदुसार को महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि वे चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। चंद्रगुप्त महान के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंद पुत्र ना कहकर मौर्य पुत्र कहा गया है। यह भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मुरा नाम भी भील महिला के पुत्र थे। यह महिला घनानंद के राज्य में नर्तकी थी, जिसे राजाज्ञा से राज्य छोड़कर जाने का आदेश दिया गया था और वह महिला जंगल में रहकर जैसे तैसे अपने दिन गुजार रही थी। उपर्युक्त में से विकल्प सी सही है। सर ये क्वेश्चन के रिगार्डिंग आंसर नहीं है। बस इन्होंने सर पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में
हाँ तो इतना सा हाइपरबोलिक इन्होंने, जैसे सम्राट चंद्रगुप्त महान थे, उन्हें चंद्रगुप्त महान पूछा कहा गया था। जाता है। इस प्रश्न से इसका सही में कोई वो नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इसको हाँ डिलीट कर बिल्कुल। दीजिए आई थिंक, मेरे हिसाब से। चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी दिया है तो हमारी हाँ जानकारी चंद्र, में तो रहना नहीं चाहिए। डिलीट नहीं ओके करिए, ओके बट हाँ क्लैप करके आगे बढ़ सकते हैं। सर, ऊपर क्योंकि जो मतलब हमें अच्छा कमेंट्स हुआ एक्चुअली जो था। पढ़ेगा उसको उत्तर मिल जाएगा। बाकी बिल्कुल कोई सर, हाँ बेहतर सर। कर सकता है तो अच्छी बात है। बाकी चंद्रगुप्त बयान दिया नहीं है सर, जानकारी। निकिता ने सर जो कमेंट किया था उसमें मोस्टली मतलब डिटेल्स हाँ उससे हम से क्वालिटी दे कवर अप सकते थी, हैं। जैसे कवर अप और थे, तो इसलिए मैं बोल रहा था। उस पर क्वालिटी दिया ना सर। हाँ हम्म। पता नहीं, अब देख, नहीं, उस पे हुआ सर, मैंने दिया था। बस बस ठीक है, कोई नहीं। इन्होंने भी जैसे जानकारी अच्छी बताई है, चंद्रगुप्त के बारे में पूरी जानकारी बता दी है, उनके पुत्र कौन थे और अशोक के बारे में सब, मुद्रा नाटक के बारे में भी बताया। तो उसमें ये है, बस कहानी इसमें यही फंस रही है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो नहीं कहीं डिस्क्राइब किया। तो पढ़िए। निधि शुक्ला का क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? क्वालिटी दे दिए ना। हाँ ठीक। टैग यूज हुए एसएससी सीजीएल, वनडे एग्जाम, मीडियम हिंदी, मॉडर्न हिस्ट्री, यूपीएससी। एसएससी मॉडर्न सर। हिस्ट्री का कोई भी पार्ट यूज करेंगे तो उसमें हिस्ट्री जरूर लगाएंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। तो यस हिस्ट्री यस से ही सर। लोग सर्च करते हैं, हमको जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत कम लोग सर्च करेंगे। ओके सर। ऑप्शन ए है 1878, बी है 1888, सी है 1898 और डी है 1900। इस पे कमेंट किया है अजय यादव ने। उपर्युक्त में विकल्प ए सही है। देसी प्रेस अधिनियम, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, यह एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इसके बड़े जोर से विरोध किया। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। किसका कमेंट था? सर अजय का था। अच्छा ठीक है सर। क्या 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 इन्होंने एक्ट की जगह एक्टर लिखा है। अच्छा अच्छा, वो सही कराइए, और अदरवाइज क्वालिटी दे सकते हैं। यस यस, मैंने भी पढ़ा था तो अच्छा था, क्वालिटी बट दी ये गई है सर इस पे। अब यस शिखा यस जायसवाल पढ़ते हैं सर। हमारे पास 5 मिनट का टाइम है सर। शिखा जायसवाल का कमेंट है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा 1878 ईस्वी में पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिया, किंतु यह एक्ट अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर लागू नहीं किया गया। इसके फलस्वरूप भारतीयों ने इस एक्ट का बड़े जोर से विरोध किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट तत्कालीन लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को लक्ष्य बनाकर लाया गया था। दूसरे शब्दों में यह अधिनियम मात्र सोम प्रकाश पर लागू हो सका। लिटन के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगाल भाषा की थी, अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित हो गई। सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के खिलाफ भी मुकदमे चलाए गए। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्रों को न्यायालय में अपील करने का कोई अधिकार नहीं था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया है। इस घृणित अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया। उपर्युक्त में से विकल्प ए सही है। तो इसमें से इन्होंने 2-3 चीजें मतलब एक्स्ट्रा मुंह बंद सही करने दिया वाला है, अधिनियम। जानकारी सही है सर। जानकारी सही है, बस अच्छा हमारा कहना ये है इसमें कि जो जानकारी ऊपर वाले में दी गई है वो जानकारी ना दोबारा से लिखा जाए तो कमेंट इतना बड़ा नहीं होगा। जैसे इसमें इन्होंने यहाँ तक तो लिख ही दिया था कि जोर शोर से विरोध किया। इसके फलस्वरूप ये हाँ, और यहाँ तक देखो, ये आप जोर शोर से विरोध किया, उसके बाद इन्होंने जो लिखा है तत्कालीन एक्ट, ये प्रिया, ऊपर की 4 लाइनें छोड़ के वो सारी की सारी नई जानकारियां हैं कि अंग्रेजी साप्ताहिक बांग्ला भाषा की थी वो उसमें परिवर्तित हुई। तो कमेंट भी छोटा हो जाएगा, इफेक्टिव होगा,
कोई पढ़ेगा तो कुछ नई चीज भी मिलेगी, दोनों कमेंट पढ़ सकता है जो भी सर्च करेगा। ये सही है। हाँ, अब ऐसे अगर ये कमेंट पढ़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं सर, 0.4 दे सकते हैं। अब जैसे ये पढ़ा हुआ है सर, इस पे ये कमेंट पढ़ा है तो ऊपर वाला कमेंट यूजलेस है, जो ऊपर वाला कमेंट है वो यूजलेस है, क्योंकि उसमें जो चीजें बताएगी वो इसमें बताएगी और एक्स्ट्रा जानकारी है। तो अब लेकिन वो बंदे ने किसी ने पहले ही डाला है तो इसलिए हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये शिखा जी हैं उनसे यही हमारा कहना होगा कि आप वो जानकारी बताइए जो एडिशनल है, ना कि उनको दोहरा के कमेंट लंबा करिए। बिल्कुल सर, और लाइन टू लाइन सर। हाँ वो ज्यादा बेहतर है, बस यही चीजें सीखनी। समय हम लोग का ओवर हो रहा है, जो नए स्टूडेंट आए हैं वो जान ले कि यहाँ पे वीडियो सब पढ़े हैं, अगर पढ़ना चाहते हैं। बाकी बियॉन्ड नोइंग में आप पॉइंट टेबल अभी रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पॉइंट टेबल में हम ज्यादा रिव्यू नहीं करेंगे, एक पॉइंट टेबल है। और कल का जो है रिजल्ट एक बार हम केवल देख लेते हैं, वीकली का देख लेते हैं। अमित सर हम लोग का लगभग टाइम हो चुका है, आपको आवाज आ रही है? जी आप 1 मिनट चाहें तो ले सकते हैं सुधांशु सर। हाँ 1 मिनट ले सकते, 2 मिनट तो एक ही है सर, 1 मिनट ले सकते हैं। श्रुति एल जी 1000, रक्षिता एचएस 500, शिवु शुक्ला हिंदी मीडियम से 333, पुष्पा मैम को 250, मतलब इस तरीके से वीकली का जो रिजल्ट आया है कट ऑफ एंड रैंडम बेस पे था। टोटल 20 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। टोटल पार्टिसिपेट नहीं, रिवॉर्डेड हुए हैं। पार्टिसिपेशन 93 बच्चों का है, पार्टिसिपेशन ऊपर दिखा रहा है 96 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से 20 बच्चों को मिला है। 20 बच्चों को रिवार्ड हुआ है। और उससे हमारा डेली का जो था, दिल्ली में हम आप लोगों को कुछ चीजों को नहीं दिखा, जैसे इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस है तो हम नहीं दिखाते, हम केवल मीडियम हिंदी वालों का जो है उनको दिखाते हैं। निधि शुक्ला, पूजा श्री एम, सीमू शुक्ला, ये भी इंग्लिश मीडियम की है लेकिन ये हमारे ग्रुप की हैं। सीमू शुक्ला, मोहित मिश्रा, दीपा तिवारी, ये 5 लोग आज के जो है रिवार्डेड है। और आज की क्लास हमारी तरफ से यहीं तक है, आज का रिव्यू। बाकी किसी को कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में पूछ सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सुधांशु सर, थैंक यू शिवम सर। नए बच्चों को धन्यवाद। इनका क्या नाम, नितिका मैम, आज आपने हेल्प किया। निकिता ने काफी अच्छा रिव्यू किया है, वेरी गुड निकिता। और थैंक यू रवि, थैंक यू अजय जी, शिव पूजन जी, थैंक यू। Rashmi, you can take on. Okay, the first comment is done by Priya Kalal. I'll take on this question. Okay, so question is by Mahima CM, who is a new player. And what will be the output of the following C code? Because she has mentioned the code. In the main, in the void main, we are having a ternary operator. If 1 is less than 2, then return 1, or else it will return 2. So this is the question. And her tags are proper, because she has also included coding, which is good. Then options are returns 1, option B is returns 2, option C is varies, or compile time error. So Priya has answered option D, compilation error. Error because we cannot use the return type as the output of the program. Note, a return statement ends the execution of a function and also returns the control to the calling function. Execution resumes in the calling function at the point immediately following the call. A return statement can return a value to the calling function. That's why we are getting an error here. Okay. Okay. What do you think? Like she is a little more descriptive, it would have been fine, I think. Okay. This is good, but still more we have moved. We can just appreciate. Yeah, we can appreciate it. Okay, and then next question. Okay. Charita, you take on this. The question is by Sukshmas. It is an aptitude question. Yesterday's activities it is given. A man buys an article for rupees 27.50 and sells it for rupees 28.60. Find his gain percent. Options are 4%, 5%, 8%, and 3%. The comment is done by Nayana YH. She's telling option A is the correct answer, that is 4%. So we have cost price is equal to 27.50, selling price is equal to 28.60, gain is equal to cost price minus selling price. So gain is equal to 28 minus 28.60 minus 27.50, that is equal to 1.10. So gain gain or profit is equal to profit by cost price into 100. She's given the formula and she's telling 4% is the answer.
6. Okay, yeah, since this is just an aptitude question, much descriptive is not needed. Yeah, we can we hit a quality bonus? Quality bonus is like just 4 point, like 0.4, right? 0.2, I guess. 0.2. Okay. It's 0.2. Okay, then we can do 0.2. Okay. And the okay, next question. Okay, it's done by Priya Kalar. So this is also coding question by Mahima CM. What will the output of this following C code? Okay, in the word main we are having two variables. Okay, three variables. Int k is equal to 8 and m is equal to 7. And z will contain the result value of this ternary operator. Where if k is less than m, it will return the post incremental value of k, or else it will return as the post incremental value of m. Then it finally prints the z value. So the options are 8, option B is 7, option C is 15, or runtime error. Okay. Then Priya's answered option B 7. Here we have declared a value of k and m as 8 and 7. Now we assign z is equal to k less than m. It is z is equal to 8 less than 7, which is false. So it will print the value of m. Here we used post increment, so the value of m is not changed, but is not incremented by 1. So the value of m remains 7 itself. So the value of z assigned as m value, which is 7. If we use pre-incremented value as shown, okay, she has altered the code if we have used this. Here she has modified post-incremental value as pre-incremented value. Then we could execute the code and get the value of m, which is 8, which is assigned to z as 8. Now if it is true, that is we get the value of k. Okay, she has she's modified if what happens if it is a pre-incremented value. This is nice explanation. We can hit the quality bonus. Yes, like we can give a quality bonus of 0.4. Next, and the next comment. Yes. This question is by Tanuja. It's a Java question. What will be the output of the program? The class test, void means string arguments, int count equals to 1, while the count less than or equal to 15. In the print statement, count modulus 2 is equal to 1. It prints star either or less. Okay, shall I tell it? Okay. Okay, if the count value is an odd number, then it will print the asterisk symbol, which is 3 times. If it is an even number, then it will print the plus signs 5 times. Okay. Then we are pre-incrementing the count value. It will loop until the while loop is false. Okay. Okay, so options are option A is 15 times the asterisk symbol. Option B 15 times the plus symbol, which is 5 times. Option C is 8 times the asterisk symbol and 7 times the plus symbol. Or option D is both will print only once. Okay. Priya's answered option C, 8 times asterisk symbol, 7 times the plus symbol. Here we initialize the count is equal to 1. It executes as follows. Okay, she has traced out the code. While 1 is less than or equal to 15, which is true, inside the println, system.out.println, 1% is true, which is equal to 1. It is true. Hence the output. Okay. Hence the output. Okay. Can you scroll it? You can see. Hence the output is the asterisk symbol. Then now the count is incremented by 1. It is count is equal to 2. While 2 is less than or equal to 15, which is true. 2 modulus 2 is equal to 1 is false because 2 modulus 2 is then 0. So it will print the plus as mentioned in the print statement. So instruction repeats until the count value becomes 16. So we get the output as 8 times the asterisk symbol and 7 times the plus symbol. Okay, this is a good explanation with the tracing and all. Okay. Okay, what is the output of this following Python code? Okay, question is by Naina YH. Okay, she has been here. She has imported threading. Okay, she has created a barrier object. Barrier is equal to threading dot barrier of 4. Okay, now number of threads is 4. And then we have a class thread. Okay, we have created a subclass of the thread class, and we are trying to override the init function of this thread. Then we are trying to override the run method to define the behavior of the thread. Okay. Then we are trying to implement the try except block. In the try block, we are having a barrier is equal to threading dot barrier of 4. It is number of threads is 4. Then barrier dot weight is created here. Then except in the except block, it will print barrier broken.
Okay, in the thread 1, which contains 100, ABC, thread 2 thread contains 101, Sukshmas, and thread 3 contains 102, beyond knowing. Then thread 1 to 3 are started, then barrier will wait until the number of threads are executed, then it will print the exit state. Okay. So options, okay, it's a Python code question. Then options, coding is missing, I think. Okay, so options are thread ID is equal to 100, thread name is equal to ABC, thread ID is equal to 101, thread name is equal to Sukshmas, thread ID is equal to 102, thread name is equal to beyond knowing. Option B is same as A, but exit is contained in this statement. Then option C is the compile time error, option D is the runtime error. Okay, Sindhu has answered, answer is option A. This is an example of the deadlock. Each thread will create its own barrier and calls the wait function on that barrier. She could have explained the barrier object and the thread. I mean, or even one thing, like she can even explain the flow of the code and how it is executed. Along with the concept also she would include. Yeah. But like as she is not a new player, we can just ignore the comment then. Okay. Next question is by Tanuja. It is of Java question. She's created a class name called my first class. In that abstract num initialize int a and int b. Coding is missing the tags. She is like she has included the programming. I think we can add the coding tag as well. Okay. And the options are option A, no error. Option B, method is not defined properly. Option C, constructor is not defined properly. Option D, extra parenthesis. And the comment is done by Priya. She's telling option B, method is not defined properly is answer. Abstract methods do not specify a method body, but they only have a method signature. As we know, abstract methods are always defined inside an abstract class. In the above code, my first class is an abstract class. It contains an abstract method named num. That is not defined properly because an abstract method only has a method signature, not the method body. So the correct answer option B. She missed out the option, mentioning the option B. Yeah, she's mentioned it, yeah, starting itself. In the beginning, she mentioned. Yeah. Liz, what do you say about this comment, guys? It's fine actually. Yeah, she has explained what is needed in this question. Well, we just can hit the Tapish. Okay. Okay. Or you can give the quality bonus to her. We have already given for other questions. I think this is fine. Appreciation is fine. I guess. Okay. Okay. Next question is by Madhu. Okay. Comment is by Madhu Mathur. Okay. Question is by Vinaya Shri CM. No, okay. Sorry. We can ignore this. It is from Okay. Okay, next comment is by Sri Lakshmi. Question is by Ganika. Output. Is it possible to overload the main condition? Okay. In the class called as demo, she has used two main methods, which is public static void main of string arg. Then one more void main. Both are empty. Okay, she's asking if it is possible to overload the main condition. Okay. Want option. Option A is nothing get printed, and yes, it is possible. Then option B is error. So no. First of all, here it is not in the proper format. Like the options. Actually, when I run this code, nothing gets printed, I think. Okay, then we can check this once. Yeah. Okay. Or if Kanika is not there, I think so in the meeting. Okay, fine. I'll suggest her to do it. Modify. Okay, even the comment is also not sufficient, I think. Then we can just ignore this. Okay. Next question is by Amulya. It is the Python question. It's telling import array. A is equal to 1, 2, 3. In print statement, we are printing A of -3, array of -3, array of -2, and array of -1. Okay. Can you scroll? Python code. Yeah, the tags are proper. There's one more suggestion I will give. Whenever you have only a single line in the comment part, in the option part, then it is no need of inserting that in the snippet. Okay, you can just give the comment. Even I'll edit this one and suggest later. Whenever you have a more than single line in the option, in that case only you can insert that in the snippet part. Okay, Charita, you can continue.
And the options are option A 3 2 1, option B 1 2 3, option C 1 3 2, and option D 3 1 2. Can you scroll? And the comment is done by Swapna. She's telling option B is the correct answer. In the case of list Python, also let us index backward from the end of the list. The last item is at the index -1, the one before it at the index -2, and so on. So the negative index provide a way to access the last item, second to last item, and so on. So that here A is equal to 1 2 3, and she has explained how it works. Assign the index value. Yeah. Yes, like one more thing. Okay, but I think she would included this in the snippet. It would be Yes. still more better. Okay, I think she's as a new player. She has tried that out. Okay, we can just appreciate. Already quality bonus is given. We can appreciate her for her like the part of explanation. Similarly, she even given for the negative numbers also here. Okay. Yeah. Okay, then it's fine. She's from VVIT, I think, right? She's in the meeting? No. Okay, fine. We can move on to the next comment. Okay. Comment is done by Amulya. Question is by Vinayashri CM. Okay. When one of the three series register is removed from a circuit and the circuit is reconnected to the current. Like one second, Pooja. It is from electrical part. But she has commented here. Is it valid? No, they can comment. But I'll check this later. I'll check it. Okay. Okay, and we can move on to the next page. Okay. Rashmi, if comment is not like the earlier comment, if it is not so much well explained, you can assign less points. That can be considered. Where it is well, you can assign more points. Okay, sir. Okay. So, but they can comment for the electrical questions also, no, sir? Computer science. Sir, like Amulya is commented for the electrical question posted by Vidyashri. That's okay, no problem. It's okay, sir. Okay, sir, then. That's fine. Yes, we were here. Then you can go through the Amulya's comment, or else I'll review it and do it. Otherwise, Pooja, I'll do it. Otherwise. Okay. Okay, then it is your comment only. Okay, it's done by me. So question is by Karthik, sir. In the public class Sukshmas, we are having a static method, static void call. Inside, we are declaring a variable array, which is A. Then inside it, we are trying to print the contents of A and array of the 0th index of the A. Then in the main method, we are calling that method and we are trying to print that. But here we get a compilation error. Okay, see the options. So options are runtime error, compilation time, compile time error, or address and 0 or 0 0. Yes, so else you can just brief out what you have explained. In this code, there's a variable array A. Then we are trying to print the arguments value passed in the system.out.println. Okay, I mentioned the code, which is A and A of 0. We get an error because variable A might not have been initialized here. The ID will inform us there is an error. So in this code, we have not initialized the local variable, which is a local variable here. Inside the method call, so the compiler will show an error. Let's scroll a bit. And show an error. Okay, so because only Java primitives have the default value, it is if the global variables are declared, if they are only declared, if they are global variables, then when we run the code, then we get some value. But here they are local variables; they do not have any default values. Thus, we cannot get any values from this. And one more point to be noted is that local variables do not get default values. Their initial values are undefined without assigning the values. Before we use the local variables, they must be initialized. Means if we want to print the values, then we have to initialize it. And if we declare a variable at the class level, they get default values. Means if they are declared as a global variables, then we may get the default values for it. If we declare a variable at the method level or the block, it is inside the code, then they do not get any values and remain undefined. Here I'm explaining if they are local variables, and that's all. So that's why we get a compilation error here. That's it. So option is the right answer. Okay, Pooja, like one suggestion I can give here, you can even insert the code, which is you can modify it, and even that you can do. Okay, but this is also sufficient. Even instead of giving the information, you can just make complete like what the question is. For that, you'll get the answer.
this was the error, so you can change the code, like what way is the correct way, you can do it also. Okay. Yes, you have explained good. Okay, and next comment we can. A question is by Pooja Assam. What hashtag internally uses what? Okay. Option A is set, or option B hash map. C option is list. Option D is collection. Okay, then Preeti has answered. Option B is the correct answer. Hash set uses the hash map internally to store its objects. Whenever we create an hash set object, one hash map object associated with it is also created. This hash map object is used to store the elements you enter in the hash set. The element we add into hash set are stored as keys of this hash map object. For example, whenever you insert an element into the hash set using the add method, it actually creates an array entry in the internally backing hash map object with elements you have specified as its key and constants called. Okay. She's mentioned the code. Private static final object present is equal to new object as its value. This present is defined in the hash set class as below. Add method of the hash set class is public boolean add. Arguments are e comma small e. Return map dot put e comma present, which is equal to null. Then add method of the hash set class internally calls the put method of the backing hash map object by passing the element you have specified as a key and constant present as its value. Okay. Next, public class public static void main. Okay, creating one hash set object. Hash set string set is equal to new hash set of string. Adding the elements, add red, green, blue, pink. Then removing the red from the hash set. Set dot remove red, which is explained with an example code here. Yes, Pooja, like she should have been given output for that. Yeah. But the thing, what do you feel about this comment? Okay, this is a more descriptive answer, but okay, it's fine. You can give 0.2 as a 0.2, yes. Okay. What should be the execution code if a class has a method, static block, instance block, and constructor as shown below? Okay. Okay, we're having a class called as first C. In this, we have a method public void my method, which will print method. Then we have an instance block. In that, we have a print statement which prints instance block. Then we have a constructor public void first C, which will print the constructor. Then we have a static block which will print static block. Then creating an object and trying to call the method. Then we are trying to call my method. Then what will be the order of this output? Okay. So option A is instance block, method, static block, and constructor. Option B is method, constructor, instance block, and static block. Static block, method, instance block, and constructor. Option D is static block, instance block, constructor, and method. Okay, these are the option in where. Okay, we can see the option. Okay, Preeti has answered. The output of this given code is static block, instance, constructor, and method. So the correct answer is option D. The order of the execution is the static block will execute whenever the class is loaded by the JVM. So first the static block will execute. Instance block will execute whenever an object is created and they are invoked before the constructor. So for example, if there are two objects, the instance block will execute 2 times for each object. The constructor will execute after the instance block and is also executes every time the object is created. A method is always executed at the end. So the order will be static, instance, then constructor, and later the method. Okay, she has also mentioned the additional information. In Java class, a static block is a set of instructions that is run only once when a class is loaded into the memory. A static block is also called static initialization block. This is because it is an object for initializing or setting up the class at the runtime. For example, there's a class called a sook. Okay, she has mentioned the int variable which is static type int type, then int j, then start of the static block static. Okay, I is equal to 50 here. Then we are trying to print static block has start called. Then we are trying to end the static block. Then in the main method, we're trying to print the we are calling sook.i, which will print the static block. So the output for this code will be static block is called and 50 gets minted. Instance block. It is an element of the class which serves as the same purpose. Same two purposes served by the constructor. These two purposes are just like constructor. Instance block can be used to initialize the instant variables during the object creation. She has mentioned the code example.
Public Okay, class. she has like you can see like she has given an example for that instance initialization she has done, then the constructor of GFG class she has done, and this is the output of this above code. Yes, again she has given the information about the Java constructor. Yes, like what do you think, Pooja? It is Yeah, it's fine, very right? descriptive and fine. Yeah. Like It's a nice even this is explanation. also good what she has done. One thing is whenever you have a coding part, you can just like by step you can explain it. Further, if you have any information to be conveyed for particular topic, in that case you can do like this, even giving extra information in that cases. First main concept is to explain about the code, then you can go more on to the other concept which is involved in that coding part. Yes, we can give a 0.4 as a quality bonus, right? Yes. Yes, then. Okay. And the next question is by Divya. How much character are allowed to create database name? It is of MySQL question. And the options are 40, 70, 64 and 75. Myself is commented. I'm telling option C is the answer. The maximum length of a table name is 64 characters long according to MySQL version. The present version 8.0.12. Charita, once again, like you can just brief out instead of going. If you are okay, you can brief out like what you are trying to explain. Otherwise, if you need to go with all the points, then even that is also fine. How it is comfortable for you, you do like that. Okay. I'll go with the points. Okay. Okay, then it's so fine. Then here the like checking the installed MySQL version is correct or not. For that is MySQL select version. The output is version 8.0.1. One row is set in 0.03 second. Okay, we can check the maximum length of the table name at the time of creating it. If we give more than 64 characters, then it will not create a table and throws an error. Okay, I'm giving you an example of both creating a table and non-creating a table. Like first one is creating a table which has more than 64 characters of table name. Here I've given a table, like created a table name called the table name demo, and it gives error because the table name is too long. And the next one is to check if it will work 64 characters or below. I created a table name, a table a demo. It prints yes, less than 64 characters for a table name works correctly. Yes, Charita, you explained well. Fine. You point to quality bonus. Yes, we can see the next comment also. You can go through it. Next comment is done by Pavitra. Even she's telling option C is an answer 64. In MySQL, limits identifier including the database name to 63 or 64 bytes depending upon the storage engine. PostgreSQL limits identifier including database names to 63 bytes. Okay. What do you think about the Pavitra's comment? Like she is telling any extra information, or how do you feel about the comment? She added 1 point, like the last one. Okay, then we can appreciate her. I think even she would elaborate the thing. Okay, and next comment. Okay. The question is by Sandhya. What will be the output? She's defining false -5, null 0, and true is equal to 10. In the main part, if condition true is -10, it prints null, else if false. Again, print true, else print false, return 0. Okay. And the tags are proper, and options are true, false, null, and none of the above. Gautam has commented. He's telling in this program we are defining values for false -5, null 10. Actually, null is 0, right? Yes. Yeah. Null is 0 and true 10. Next, in main function, we are checking if condition true -10 means 10 - 10 is equal to 0. If 0 returns false. So it will goes to else block. Again, it will check condition. If false means, it means f of -5, it returns true. So it will print option A, true.
he explained well, but he has like he took null value as 10. Okay, but in the further time also, like he has considered. What do you think? Someone can initiate a reply chain for this. Okay. Okay. I'll just share this question. You'll get in my gun so that you can comment for this. I'll check it if anyone. Okay, I think we can move on to the question comments. Okay. Okay. Okay, the comment is done by Sri Lakshmi. Question is by Tanuja R. Explain the RISC design philosophy. Okay, this is a microcontroller question. Okay, Sri Lakshmi has commented philosophy RISC design. RISC is a design One second, Pooja. It's a copied code, I think. Okay, then we can just ignore this. Okay. Even I think He is also copied, I guess. We can better to check this both. Yeah. Or both the comments are same. A process architecture is given. I think these much of lengthy comment is not required. Just the points you can give which is required. That is the more than enough. For all. Sorry. Yes, better like we can just ignore this one. This comment, both the comments done by Gautam and Sri Lakshmi. I'll check it later, and even I can delete it if it is complete copy. I think the same question again. Yeah, both. This is also copied, I guess. Fine. You can delete the comments, I think. So why? Because all complete content is only copied means it has not been acceptable. I'll cross check this and I'll do it later. Okay. This also not. Yes. Okay. Question is by Mahima CM. Explain the bootstrap loader. Okay. This is a system software question. Okay, Sapna has answered. A bootstrap is the first code that is executed when the computer system is started. The entire OS depends on the bootstrap program to work correctly as it loads the OS. The OS is loaded into the RAM by the bootstrap program after the start of the computer system. Then the OS starts your device drivers. The bootstrapping process does not require any outside input to start. Any software can be loaded as required by the operating system rather than loading all the software automatically. The bootstrapping method is performed as a chain. It is at each stage. It is responsible of the simpler and smaller program to load and execute the much more complicated and larger programs. This means the computer system improves in increment by itself. Okay. Yes, sir. Content is good, I think. Yeah, right? it's good. And even the representation she has done well as a nuclear. Yes. And the question is by Swati DN. What is the scope of a variable? It's a C language question. The comment is done by me too. Scope of sorry, like we can move on to the latest comment done by Tanuja. Okay. The comment is done by Tanuja. A scope in any programming is a region of the program where a defined variable can have its existence, and beyond that variable it cannot be accessed. There are three places where variables can be declared in C programming language. Like inside a function or a block, which is called local variables, outside of all functions, which is called global variables, in the definition of a function parameters, which are called formal parameters. Yes, guys, what do you say about the comment? Even you can discuss like after going through the comment part. So if it is, representation is fine. The content, what is it's a good one. Yeah. It is fine. Yeah, this is fine. What do you think about the quality bonus? We can give or no? If it was more descriptive, then we could have given the quality bonus. Yeah. Appreciation is fine. Okay, then fine. Yes. Okay. One more comment by Tanuja R. Okay, the question is by Kanuja Sri. Advantages of the tuple over the LL list. Okay, this is a Python question. Sorry.
Okay, Tanisha school. Okay. Since tuple are quite similar to list, both of them are used in a similar situation. However, there are certain advantages of implementing a tuple over a list. Below listed are some of the main advantages. We generally use the tuples for heterogeneous or different data types and a list for homogeneous or similar data types. Since tuples are immutable, iterating through a tuple is faster than with a list. So there's a slight performance boost. Tuples that contain immutable elements can be used as a key for a dictionary. With list, this is not possible. If you have data that doesn't change, implementing it as a tuple will guarantee that it remains the written right protected. Okay. Yeah, this is a good informative code. The question is by Preeti. Explain return type resolver in C++. It is of C++ question. The comment is done by Enosh. Okay. The comment is done by yes, even it is today's only, right? Okay, you can go through his comment also. Return type resolver idiom makes use of a proxy class and templized conversion operator function in the class. Get random n function above can be implemented with a class and a member conversion function as follows. C++ compiler attempts to convert the temporary object into the container class object. Okay, I think we can just appreciate about the comment. And the next comment is by Tanuja. The type of the variable being initialized can be useful information to have in certain contexts. Consider, for instance, we want to initialize SQL containers with random numbers. However, we don't know the exact type of the container expected by the user. It could be std list, std vector, or something custom that behaves like SQL container. A straightforward approach to write and use such a function would be as follows. Return type resolver idiom makes use of a proxy class and template conversion operator functions in the class dot get random function above can be implemented with the class. She has given the code like class get random size count public get random initializing n is equal to 1 and count of n. The template class container operator container C. The for loop giving like size t I is 0 I less than count I pre-incremented I, so return C. The main function is random is equal to get random n, and the random of v is equal to get random of n of 10 random of l. Okay, get random n class as a constructor and a templized conversion operator function. For initialization, a temporary object of get random n class is created and assigned to the desired container class. C++ compiler attempts to convert the temporary object into the container class object. The only way to do that is via the conversion operator. The conversion operator is instantiated with the type of the container that is being populated. Due to atomic resolution of the return type, the user does not have to spell it out again. Note that insert member function has been used instead of pushback because history of set does not support pushback. Okay, she's explained well. Okay, and the quality bonus is given. Just we can appreciate this comment. I think we have gone through this comment now. Yes. Okay. And the next question is by Gautam. List out the fundamental OOP concept. The question is by Siyash. The comment is done by Suraj. Can you scroll? There are 4 main OOP concepts in Java. These are abstraction. Abstraction means using simple things to represent complexity. Abstraction means simple things like objects, classes, and variables represents more complex underlying code and data. This is important because it lets avoid repeating the same work multiple times. Again, the next is encapsulation. This is the practice of keeping fields within a class private, then providing access to them via public methods. It's a protective barrier that keeps the data and code safe within the class itself. This is concerned with hiding the implementation details and only exposing the methods. The third one is inheritance. This is a special feature of object-oriented programming in Java. It lets programmers create new classes that share some of the attributes of existing classes. This is concerned with the relationship between classes.
And the last is polymorphism. This Java hook concept lets programmers use the same word to mean different things in different contexts. One form of polymorphism is in Java is method overloading. This is concerned with having a single form but many different implementation ways. Yes, like he has explained well, right? Yeah. Like I've gone through it and it was good. So I've given a quality bonus and even appreciated him. Yes, and the next comment. The next comment is done by Pavitra. Encapsulation, inheritance, polymorphism, abstraction. She's telling encapsulation. It means that an object works is not visible for other object and that its data also isn't shared. When we go to the supermarket and buy same clips, the clips is the only thing you get. We don't know how it's made because we don't need to. Inheritance in is given an object similar properties and is its parent's object. In a company, we can have many employees. We need to know all their names. So the parent class employee gets the property name. Okay. Polymorphism. Polymorphism means different object can implement the same thing in different way. We have class, animal, and all animals can make sound. So we give them make a sound is method. Okay, like even the Pavitra's comment is also good, right? She has given examples for this, for all the particularly like general examples she has considered. Yeah. Okay, both the comments are good. Yes, you can do one. Okay, once again. Where we were like down scroll. Once again, like in the first page itself, we are reviewing, right? This comment, I think so. No. This was reviewed. It is reviewed. Priya's comment we have to go. Okay. This one, right? Pavitra is also done. Vidyashree's comment. I think Vidyashree is from electrical. We can ignore her comment. But yes, then next. The next question is by Pooja. Explain what is Dreamweaver template. It is a web development question. The comment is done by Tanuja. She's telling a template is basically a structure used commonly for many items, pages in a website in our construct. A Dreamweaver template is a common structure created and used for all or some pages of a website using the Adobe Dreamweaver tool. The template structure so created is Dreamweaver and is saved as a .dwt file. There can be any number of Dreamweaver templates for a website. That is, each session of a website can have its own template with various in structure or color from the other. Yes, so what do you say about this, Pooja and Charita? She's explained. Yeah, it's explained properly. Okay, but when the quality bonus just 0.2 we can give. Yeah. Sorry. I think should be still more much good explanation can be given for this. Okay. Question is by Amulya. What is the output of this below code? It's a Python code question. Okay, weekdays, which it contains the contents is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Then list as tuple. Okay, is equal to tuple of weekdays. Then it will print the list as tuple. Okay. Then okay, Swapna's answer. The output will be Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Explanation. Here the variable weekends assigned a list. Then here list as tuple is equal to tuple of weekdays. Tuple is a built-in function in Python. Then the list is passed as a parameter to the function tuple. So finally we get the output of type tuple. Okay. What do you say about the quality bonus? Point two. The point 2 is fine. Okay, like even she has given the exact answer. Yes. But even the thing should still more give information in still better way. I think so.
Okay, and the next comment you can go through. And the comment is, the question is by Pavitra. It's a Java question, difference between string, string builder and string buffer. And the comment is done by Swapna. Telling Java provides 3 classes to represent a sequence of characters, string, string buffer, and string builder. The string class is an immutable class, whereas string buffer and string builder classes are mutable. The string builder class is introduced since JDK 1.5. She mentioned difference. A string buffer is synchronized, that is thread safe. It means 2 threads cannot call the methods of string buffer simultaneously. String builder is non-synchronized, that is not thread safe. It means 2 threads can call the methods of string builder simultaneously. And the other point is string buffer is less efficient than string builder. In this, string builder is more efficient than string buffer. She's given the example. She's created a buffer test class. In that main string buffer, a new buffer, buffer.append Java, the println buffer. Output is hello Java. And the string builder example is string. She created a class called builder test. The main class, the new class is created again, new string builder, and the builder.append Java. Output is builder. The output is hello Java. Yes. Like it is good content. We can give a quality bonus of 0.4 then. Rashmi. Yes, sir. What you are expecting here for like anything else you are expecting here in this comment? No, so like she has given the difference also, and even the example she has given. But one thing she would explain the example in few of the words, sir, where she has used the string buffer and all. Fine. In that thing she would still more do it in the brief. Fine, Rashmi. Okay. Okay, and the next comment. Okay. Question is by Shruti LG. Explain the pointers in C languages with a programming example. Okay, Amula has commented pointers in C language is a variable that stores or point the address of the another variable. A pointer in C is used to allocate the memory dynamically. It is at the runtime. The pointer variable might be belonging to any of the data type int, float, character, double, or short. Pointer syntax. Okay. Pooja, sorry, like it was for yesterday's comment. Okay. We can move to the recent comment. Okay, recent comment is done by Pavitra. Yes. Pointer is a variable that stores the address of the another variable. A pointer can also be used to refer to another pointer function. How does the pointer work? Okay, if we declare a variable v of the type int, v will actually store a value. Int v is equal to 0, v is equal to 0 now. However, each variable apart from values also has its address. The address can be retrieved by putting an ampersand, which is ampersand symbol, before the variable name, ampersand of v. If we print the value of the variable on the screen, it will look a totally random number. Okay, in the C code, she is trying to print the address of v. Okay, the output, if it was mentioned, it would have been fine. Okay. Like one more thing, you just whenever you have a question like it is of other, like when the question part, when you have like write a program for a palindrome, in that case, what you need to do is just no need of giving the question like the code only, it is not required. Even you can explain it how the flow is of the code, then it makes a valid. Like I've gone to like now I remember because while seeing this code, so I've said that whenever you give a code, if it is necessary, you can explain the flow, how you are telling the code. Just know, like just I've given a below code, you can go through it. Not like that. You can just give a information like which particular information is needed for that code. You can mention that in the below. So it makes still more better. Yes, like what do you say about the Pavitra's comment, quality bonus? Yeah, she has explained her own code. I think we can give a quality bonus of 0.2. Okay. Yes, and can move on to the next comments. Okay. The question is by Apurva BC. It's of electrical and electronics. Okay. Shall I continue? Yes, you can take on. What are the difference between combinational circuits and sequential circuits? Okay, and the latest comment is done by Vidyashri.
Yeah. No, it's okay. No, sir, no, Charita. It's fine. I can ignore this one. Electrical questions for now, you can ignore it for Yes, review. sir. But yeah, if students are giving the answers, that's not a problem. Okay, sir. Like Vidyashri, she has given so we are just ignored. Okay, Charita, you can take on this. The next question is by Nayana. What gets printed in the below code? If there is error, why the error gets? Explain the code in detail. Okay. Class 1 final int a is initializing a value is equal to 15, and class 2 extends 1 a value is equal to 20, and the class test extends to final int a is equal to 30. The main test t is equal to new one, and the system dot print t dot a. The comment is done by Preeti. She's telling an error will occur when we execute the given Java code, and this is the error. Okay, she's given what it happens. We can't store superclass object in subclass reference, but we can store subclass object in superclass reference, because instance variables cannot be overridden in Java. In Java, only methods can be overridden. Hence, compiler will raise an error. The given Java code is the demonstration of inheritance concept, where class 1 is a superclass and variable a is the data member initialized with value 15, and it is prefixed with final keyword. Initialization of variable mandatory. Okay. Final is a non-access modifier for Java elements. The final modifier is used for finalizing the implementations of classes. Methods and variables and some rules of final variables are, she mentioned the rules. Local final variable must be initializing during declaration. All variables declared in an interface are by default final. We cannot change the value of a final variable. A final method can be overridden. In the above code, class 2 extends the class 1, and we are overriding the final instance variable which is declared in the class 1, which is not right. And someone has replied. The reply is by Nayana. Why we can't store superclass object in subclass reference, but we can store subclass object in superclass reference. Okay, it makes zero sense to allow that. The reason is because subclass generally define additional behavior. If you could assign a superclass object to a subclass reference, you would run into problems at runtime when you try to access class members that don't actually exist. Referencing subclass objects with subclass versus superclass reference. There are two approaches to refer a subclass object. Both have some advantages or disadvantages over the other. The declaration effect is seen on methods that are visible at compile time. The first one is the first approach, reference using superclass reference. Referencing using superclass reference. A reference variable of a superclass can be used to refer any subclass object derived from that superclass. If the methods are present in superclass but overridden by subclass, it will be overridden method that will be executed. The second approach, referencing using subclass reference. A subclass reference can be used to refer its objects. And she's given an example. She's consider Java program. In this, the class bicycle, int gear. You can see, okay. That is a lengthy code. I'll check this once later. Okay. But what do you think about the comment and the reply? Yeah, it's explained well. Preeti explained well, but one thing I can accept, still more I need in this comment is once she can give a modified code by the error, and she can overcome that error and give the code. One thing she can do in this comment, so we can just give her as a point to as a correctness. Okay. Okay, and the reply, in the reply part, one interesting thing she could do here is just she can include the question, even that would be still more better. So that Preeti would do a reply for the Nayana's question. Even that thing you can do. If you find any loopholes in any of the comments, you can just question it and leave. If you can wait for the reply from the person who has done the comment, or else you can do it in the later. Even that will be also a good thing. And even what do you think about the Nayana's comment? Okay, like I said, they will go through this code and later decide the quality bonus. Okay, fine.
and then we can see some of the replies done by the participants. Yes, you can take on. Okay. Yes. Okay, question is by Priya Kalal. Predict the output of this code. Okay, she has mentioned the try catch block code. Okay. Okay, we so can see Naina the has commented just, something. Okay, we can see the just we can- reply. Okay, Priya Kalal answered. Yes, the answer is absolutely right. I just added a few more information. When we execute the above code, we get two errors. First error, it arises in the throw 10. It is because we can't throw the data type in Java. Second error arises within the catch block. It is because we can use the catch exception of E instead of any data types as in the code. Okay, she has added additional information to her code. Okay, Naina has commented. An error in the above code. She had just given the error. Yeah, okay. But she has explained about the error. But even she would okay, fine. Like she even she would also try in this also same, like try the code which has been modified and make it correct, right? Yeah. I think quality bonus if you need to give for this. No, it's not needed, I guess. Okay, fine. Okay, next one is done by Naina YH. Yes, we have her just question also. Yeah. Have given. Okay, Niranjan has commented. What is the scope of a variable? Question is by Swati. Okay, the reply is for Neetu BK. Okay, Niranjan has commented. In the another word, scope of a variable refers to the visibility of a variable, where in a program we can see it, use it. Normally, every variable has a global scope. If we use the variable inside a function or a block, then it is called as local variable. Okay, I guess he has added more information to her comment. Yes, you can just appreciate this. Okay, next comment is done by Niranjan. Yes, okay. Question was by Spurti. Yes. Okay, is the empty.java file a valid source file? Okay, this is our question. Okay, and we can see the reply. Okay, Niranjan has commented, since the Java file is empty, the compiler do not generate any class file in order to process. If you would declare the class, it will compile and create test. Also, we can compile and execute without main method by using the static block. Okay. What do you say for this? I you think, can just yeah, we can appreciate just. Okay, fine. Whenever you are doing a comment, just add a message like why you are giving a the reply. Whenever doing a reply, you can just add a message like why you are doing a reply and what is the case. That would make helpful. Yes, you can take on the next one. Okay. The question is by Sandhya. Mention some tips you can use to reduce the load time of a web application that you have written. Okay. We have a reply here. Reply is by Niranjan. Also, we can, by using content delivery network, it makes loading the content faster in your site. Minimize image size. We can easily load the images in less time. By applying CSS3 and HTML5, it makes the website lightweight and load quickly in mobile pages too. Optimize caches. Use local memory rather than sending requests to server again and again for the related data. Okay. For this, I think we can give 0.2. Okay, now we can move on to the points table. Ashmi, yes, sir. We can skip the points table today, and we'll have some discussions. And okay, sir. Yeah, other students we can they can leave the meeting now. And Bindya, Rashmi, Tejashni, we will stay here. Okay. Thank you for involving in the review session, Pooja and Charita, and thank you all for involving in the review session. Thank you, guys. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Rashmi, check if Sindhu can connect. Yes, sir. Like she was having a back pain, so she said. Oh, is it okay? Then leave it. Not an issue. Yes, sir. Priya and Shruti, I think. Thank you. I think you can leave the meeting now. Okay. Karthik, sir. Okay. Bye. Bye, bye, Shruti. Bye. Hello, Karthik, sir. Sir. Karthik, sir. Hello. Check this. Divya is there. Divya, just ask her to join for 5 minutes.
Okay, sir. Or she can join with you also, no issue.